Yes, now we are continuing. There was some technical error from my side. Okay, let's continue. Okay, so by using Punnett square, depict the genotype and phenotype of the test crosses where green pod color capital G, okay, over dominant yellow color. Okay, तो what is टेस्ट क्रॉस, जहाँ पर आपके पास जो F1 प्रोजनी मिली है, आप उस F1 प्रोजनी को रेसेसिव पेरेंट के साथ ब्रीड करते हो. ठीक है, देखिए जैसे मान लो आपके पास कैपिटल जी था, स्मॉल जी था. ठीक है, all the F1 generations that I have got are capital G small g. Now if I am taking this capital G small g and breeding it with small g, I can get two things, that I can get capital G and small g. So phenotypic ratio is also 1:1 and genotypic ratio that I am getting is also 1:1. So here in test crosses, both the phenotypic and genotypic ratios that we will be getting will be 1:1, and this is how you can make the cross. But this was only the thing that I wanted to say. How many of you have just observed that I did it wrong? Because I know that many of you would have done wrong. Question seriously told in the beginnings, children, that by using Punnett square, not any random method, you needed to use Punnett square. So you saw na that we have done it wrong. You should have used a Punnett square. Why I did it wrong? Because I knew that many of you would have done this mistake. Because we are in a hurry of making a cross. But it told na that you make it, please make it with a Punnett square. See how to make it. We will make this type of square. Okay, suppose this we are having male and this we are having female. Here. Okay, let me erase it. I will be attaching this and at the end, okay, because at the end I think if we are having some space, yeah, we are having some space, so I am solving it here for you. Suppose we have GG and we have GG, this type of two things we have. So if I make a cross, sorry friends, I am not that much gizmo friendly kind of a guy, that I do not, my hands are not that much strong on technical work. That's why I might be a little slow with the technical works, but the answers will be to the point that I will be providing you. The answers that I will be providing you, those answers will be to the point, I think. Okay, let's make the square. Yeah, so we are ready with our square. Okay, so see, one we have capital G small g and one we have small g. Okay, wait, one step back. Okay, yeah, no need of making so many boxes. I think we have one small g and one we have capital G small g. There we have a female, suppose, and there we have a male, suppose. And here also we have small g, and here also we can have capital G small g. So here we are getting, okay, I, because of these type of technical problems na, I am missing out my basic concepts. Okay, wait, leave the all these type of things. What are the two types of gametes that we are getting from here? Capital G and small g. And what is the type of gamete that we are getting from here? Small g. So capital G, small g and small g. One we can get capital G small g and one you can get small g. So capital G small g and small g. This both have the different phenotypes. Am I correct or not? This is green and this is yellow. So phenotypes are also different and genotypes also different, capital G, small g and GG. So phenotypic ratio, what are we getting? Phenotypic ratio we are getting 1:1. And what is the genotypic ratio that I am getting? The genotypic ratio that we are getting, that is also 1:1. Both the phenotypic and genotypic ratios are same.
Okay, so this was only the demand of the question. I have told you the correct thing. So here the answer should be 1 is to 1 and 1 is to 1. I have explained. Now explain how did Miller did his experiment. Just NCRT you go through that experiment. It is given in NCRT. Plasmodium protozoa needs both a mosquito and a human host. Yeah, we know that Plasmodium is a parasite. It has two Plasmodium parasite is two. Okay, it has two hosts. One the primary host where it performs its sexual reproduction, and one is the secondary host where it performs its asexual reproduction. So primary host is the mosquito Anopheles and secondary host is the man. You can explain the entire life cycle. It is very well given in the NCRT book. You can use the flow charts and explain. Now this is a GK question that explain any 6 ways of achieving good health. This you write by your own, by doing yoga, by eating balanced diet, by performing exercises, by maintaining hygiene, by taking bath regularly. These type you can explain. Now name and explain a surgical contraceptive method that can be adopted by the male partner. Okay, male. Male we have vasectomy. Now you need to explain vasectomy, na? So even if you have made the diagram, it is good, and even if you haven't made the diagram, it is okay. But you need to explain that vast difference are cut during this process and are tied. It's a very small time as surgery. Openly, it can be done in government organized hospitals free of cost, and it is not immediately having a sexual intercourse just immediately after having vasectomy does not ensure that sperm will not go, because some of the sperm might be attached with the urethral wall and all. So all these you can need to explain, even if you haven't explained so much, even if you just explain that vast difference is cut and tied, it's okay. But one question again I am asking you, comment section में बताइएगा, to having vasectomy or tubectomy help us get prevented from STDs? Please mention in this is a very good question. Biodiversity plays a major role in many ecosystem services that nature provides. Okay, this is an NCRT line. We have 3 points here. One point is the narrowly utilitarian, second one was the broadly utilitarian, and third one is the ethical issues. So ब्रॉडली यूटिलिटेरियन इन्होंने पूछ लिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है. ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में हमारे पास दो एनसीईआरटी ने डायरेक्टली दिए हुए, एक तो ऑक्सीजन और दूसरा इन्होंने बताया हुआ पॉलिनेशन के बारे में. अब दोनों एक्सप्लेन कर दें. स्टेट वन एथिकल रीजन सो दैट वी हैव टू सेव आवर environment for our future generation, because it's just like a loan that we have taken it from them, and we need to return them what they want when they will come. So this is only the ethical reason. One of the major approaches, question number 26 now we are starting with. I think the video may go quite longer because detailed explanation we are having. So one of the major approaches of crop improvement program is artificial hybridization. Okay, artificial hybridization, it is from sexual reproduction in flowering plants. If the flower is bisexual, what you all need to do? You go it very easy question. First you need to do the emasculation, that is you need to cut the anther, and then you need to do the bagging of the, okay, because it is just question making sure it is sure, not an entire process need to be explained, only you need to explain the process of emasculation and the process of bagging. Comment me an example of any two bisexual flower and one a plant. Name a plant whose flowers are unisexual but the plant is bisexual. Name any plant, one plant in the comment section. Very important for competitive exam. Now Eli Lilly, my favorite company, Eli Lilly. Why? Because Eli Lilly did very good for us. It produced in 1983 a recombinant DNA technology insulin. We got insulin from it, na? So Eli Lilly's contribution from diabetic patient through recombinant DNA has been overwhelming. Explain how. You can explain that it is given that they made a chain corresponding to the
chain A and chain B of the human insulin inserted into the plasmids of E. coli, prepared the two chains separately and then joined them by disulfide bridges. Okay, you can do this. Next, again from a molecular biology, very important question, we have it here. Very important question, we have it here. The question is about human genome project. The question is about human genome project. Human genome project was year 1990. Now enlist any 4 prime goals of human genome project. Directly you can see it from NCERT. Name any one common non-human model. It is given in NCERT. If you haven't seen, you can see it can be either E. coli. You could have mentioned E. coli. You could have mentioned yeast. You could have mentioned bacteria. You could have mentioned rice, but that is not organism. So you could have mentioned these. Now finally we have reached the last section, that is section number D, which is having our case based part. So next, okay, question about aneuploidy. See, aneuploidy you would have studied earlier. Aneuploidy is when 1, 2, 3 chromosomes get added or get removed during anaphase 1 due to disjunction of chromosomes. This is not set of chromosomes. This is particular chromosome. It is asking that if during spermatogenesis the chromatids of sex chromosomes, okay, the chromatids of sex chromosomes, either it can be XX or it can be XY, fail to segregate during meiosis, write only the different type of gametes. You can have 22 plus XX gamete you can get and 22 plus XY gamete you can get. इसी से अगला क्वेश्चन बनाया गया है. देखो यहाँ पर उन्होंने दिए भी है कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाए, सपोज जिसमें आपके पास है 22 प्लस XX और 22 प्लस Y. I think this only they have given, na? As far as I can able to understand. या यही इन्होंने बताया हुआ है 22 प्लस XX ना. ओके, 22 प्लस XX और 22 प्लस XY. इससे आपको एक ही तरीका का, इससे जो आपका जाइगोट बनेगा वो क्या बनेगा, 44 प्लस XXY. और 44 प्लस XXY आप आराम से बता सकते हो किसके सिम्टम है. दिस इज क्लाइनेफिल्टर्स सिंड्रोम. ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या क्या है, गायनेकोमेस्टिया, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेन. और दूसरा सिम्टम क्या है, स्टेरिलिटी, दैट इज स्टेराइल मेन. नेम अ बेस्ट नोन एंड मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइड एबनॉर्मलिटी. दिस इज डाउन सिंड्रोम. Okay, if you have any problem, this is Down syndrome because it is telling abnormality. Aneuploidy means chromosomal or autosomal. It should be Down syndrome because you have seen syllabus में ही आपके हैं Down syndrome, Klinefelter's Turner. Klinefelter's और Turner's में sex chromosomes involved है, सिर्फ ऑटोसोमल एक ही बचा डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम के 2 सिम्टम बता दीजिए, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, क्रीज ऑन पाम, फरोड टंग, ये सब बता दीजिए. मुझे जो पूरे पेपर में का सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा वो यही ग्राफ लगा, क्योंकि ये ग्राफ थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, रटने वाले बच्चों को लिए थोड़ा सा चिंताजनक चिन्ह था, क्योंकि ये ग्राफ में थोड़ा ध्यान दे के सॉल्व करने की कोशिश मेरे हिसाब से तो करनी थी. सो दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी. देखो आपको एक ग्राफ दिया हुआ है जहाँ पर एक तरफ आपके पास नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिया, माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है. नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक तरफ दिए हुए हैं और टाइम एक तरफ दिया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से है. आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है, सबसे पहले नीचे में लिखा हुआ है नो साइंस एंड सिम्टम्स, मतलब आपके पास वायरस आ चुका है लेकिन आप में कोई साइंस और सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं. अब जैसे ही साइन और सिम्टम आने शुरू होंगे वैसे ही आपको तो पता चल जाएगा कि आपको इन्फेक्शन है, तो आप अपने आप को बचाना शुरू कर दोगे. ठीक है, तो मतलब अब आप दूसरे को इन्फेक्शन कम फैलाओगे, आप अपने आप को बचाना शुरू कर दोगे. तो सबसे ज़्यादा चांसेस कि आप दूसरे को इन्फेक्शन फैलाओ वो तब है जब आप इनक्यूबेशन पीरियड में है. इनक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि
जो भी पैथोजन है वो आपके बॉडी में एंटर कर चुका है, लेकिन वो पैथोजन अब अपने इफेक्ट्स नहीं दिखा रहा है। वो पैथोजन आपके बॉडी में एंटर कर चुका है, लेकिन अब वो अपने इफेक्ट नहीं दिखा रहा है। अभी वो धीरे धीरे देखो सिम्टम्स दिखाएगा। तो इस वक्त आपको पता ही नहीं है कि आपके बॉडी में पैथोजन है ना, तो आप रोड पे ऐसे घूमते फिरते रहोगे और सबको वो देते रहोगे। ठीक है, उसके बाद है स्टडी द ग्राफ एंड राइट व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड। आई जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड। नेम अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दैट कैन इजीली बी ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। एड्स। एड्स का आपको पता है इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 10 साल का होता है। अगर किसी के बॉडी के अंदर आज HIV गया है तो उसको 10 साल बाद, अगर वो कोई टेस्ट नहीं कराता है, ब्लड टेस्ट कभी जीवन में, 10 साल बाद या 5-7 साल बाद उसके बॉडी में इफेक्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। नेम द स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स। कौन से लिम्फोसाइट्स अटैक होते हैं ड्यूरिंग एड्स? आपको पता है टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स को HIV सीधे सीधे अटैक करता है। ठीक है, दैट आर अटैक्ड, आई थिंक अटैक्ड, you would have written macrophages, but I will not tell macrophages, and that's not a lymphocyte also. So draw a schematic label diagram of antibody. आप बना सकते हो आराम से. You can have 2 heavy chains, 2 light chains, 2 disulfide bridges, so you make it. Okay, that was given in NCERT book. Now, in which period the number of immune cells forming antibodies will be the highest in a person suffering from pneumonia? Okay, now see, in which period. Now यहाँ पर तो लिखा है कि डेथ, यहाँ पर तो डेथ हो रही है ना, यहाँ पर तो आपका लिखा हुआ है कि पीरियड ऑफ डिक्लाइन है, और यहाँ पे डेथ इफ इम्यून रिस्पॉन्स एंड और मेडिकल। सो दिस इज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस इलनेस। ये आपका ये पीरियड ऑफ इलनेस है, इसी वक्त आपके बॉडी में सिम्टम्स रहेंगे, तो इसी वक्त एंटीबॉडी सबसे ज़्यादा बनना चाहिए पीरियड ऑफ इलनेस में। ठीक है, देखो ये आपका जो पीरियड है, दिस इज़ द पीरियड दैट इज़ इंक्यूबेशन पीरियड। देखो ये जो आपके पास पीरियड था, वेट अ मिनट, ये वाला जो पीरियड था, ये पूरा जो पीरियड था, दिस वाज द पीरियड और इंक्यूबेशन पीरियड, दिस वाज द टाइम व्हेन यू वर स्प्रेडिंग द डिजीज मोस्ट, एंड दिस इज द टाइम व्हेन immune cells of the body will be the hyperactive state. So answer should be this. And which type of bodies na should be B lymphocytes. B lymphocytes, these B lymphocytes produce plasma cells, and the plasma cells are responsible for the synthesis of antibodies. Bioreactors से क्वेश्चन है, डायरेक्ट यू गो थ्रू द NCERT book, there are 2 paragraphs, most of the points from those 2 paragraphs need to be written. ठीक है, is the biological product? No, it should be no, because downstream processing, that is separation and purification before marketization. So यहाँ पर आंसर आना चाहिए downstream processing के बारे में, so इसका आंसर तो no होगा, downstream processing आपको इंक्लूड करना होगा। ओके, यहाँ पर आपको बायोरिएक्टर्स के बारे में लिखना है। इको R1 के बारे में जैसे पूछ लिया है, तो एस्चेरिशिया कोलाई R1, ये भी मुझे आपको एक्सप्लेन करना होगा शायद ना। हाँ ओके, ये भी एक्सप्लेन करते हैं, चलो। इको R1, E stands for the genus, that is Escherichia. CO stands for the species coli. R stand for the strain RY13 and 1 is the order. ओके, और इसका पैलेंड्रोम सीक्वेंस क्या है ये आपसे पूछ रहा है ना, एक सेकेंड रुक जाए बस मुझे दे। ठीक है, 5' to 3' और 3' to 5' में बताते हैं। ये है आपका, ओके प्लीज वेट, GAATTC। ठीक है, एक तो ये यहाँ पर एक कट लगाएगा, एक कट तो ये यहाँ पर लगाएगा, और दूसरा कट ये यहाँ पर लगाएगा। ठीक है, एक कट ये यहाँ पर लगाएगा और दूसरा कट ये यहाँ पर लगाएगा, तो आपको जो फ्रैगमेंट्स मिलेंगे ना, वो इस तरीके के फ्रैगमेंट्स मिलेंगे। इस तरह से एक फ्रैगमेंट और उस तरफ से दूसरा फ्रैगमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द फ्रैगमेंट पोर्शंस। ओके, ठीक है, रिकॉग्निशन साइट एंड क्लीविंग साइट्स आपको दोनों मेंशन करने थे। आपको रिकॉग्निशन साइट के लिए पैलेंड्रोम तो लिखना ही, तो उसमें G और A के बीच में भी मार्क करना ज़रूरी था।
व्हाट आर द प्रोट्रूडिंग हैंड्स, स्टिकी एंड्स, स्टिकी एंड्स होते हैं। स्टिकी एंड्स का क्या रोल है? दे इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ डीएनए लाइगेज, द लाइगेजिंग पावर ऑफ डीएनए लाइगेज, ठीक है, ये इसका एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ डीएनए लाइगेज। It is sometimes observed that the F1 progeny shows a phenotype that resembles both the pole. Explain this type. This type is codominance. ओके, ये टाइप जो है ये कोडोमिनेंस है। आपको ए बी ब्लड ग्रुप को बताना था, बता सकते हो, फादर मदर को लेके, ठीक है, बता देना। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ओके ओके ओके, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में एनसीईआरटी ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है अमीनो एसाइलेशन के बारे में। यहाँ पे एक एंजाइम भी यूज़ होता है, अमीनो एसाइल सिंथेटेज, ठीक है, यहाँ पर एटीपी भी खर्च होता है, ये सब बताइए आप, ठीक है। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए भी इसको हम लोग बोलते हैं। हाउ डज इनिशिएशन द ट्रांसलेशन प्रोसेस अकर इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन कैसे होता है? प्रोकैरियोट्स की अगर आप बात करोगे तो प्रोकैरियोट्स में तो एक एनसीईआरटी की लाइन है कि आपका जो ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसलेशन होता है वो सिनोनिम कपल्ड होता है। जैसे ही बनते जाता है एमआरएनए का वो पार्ट, वैसे ही वो ट्रांसलेट होते जाता है, वहाँ पर भी इनिशिएटर कोडॉन्स होंगे। यही बस आपको एक्सप्लेन करना था। व्हाट वर द अनट्रांसलेटेड रीजन्स। अगर आप एमआरएनए का मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाएं, और ये मेरा 5' एंड और ये मेरा 3' एंड है, तो यहाँ पर मेरे पास AUG, इससे पहले के जो पार्ट होंगे वो मेरे अनट्रांसलेटेड रीजन्स है। और मान लो यहाँ पे UAA, ये मेरा स्टॉप कोडोन है, इसके बाद के जो पार्ट होंगे ये मेरे अनट्रांसलेटेड रीजन्स हैं। ये सिस्टमैटिक और अच्छे तरीके से आपका ट्रांसलेशन हो, इसको इसी के लिए ये होता है। एक्सप्लेन द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो सैक। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। एम्ब्रायो सैक का आपको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट एक्सप्लेन करना, आप नहीं कर पाओगे। न्यूसेलस में से मेगास्पोर मदर सेल बनता है, मेगास्पोर मदर सेल में फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं, ये आप कर सकते हो। और उसके बाद आपको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का डायग्राम बनाना है। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन भी आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो एनसीईआरटी में। कोरियोनिक विलाई, यूट्राइन वॉल, मर्ज, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन और प्लेसेंटा के फंक्शंस बता सकते हो। ड्रॉ डायग्राम, ये तो एनसीईआरटी का जस्ट एक डायग्राम आपको बनाना है। इसी के साथ हम लोगों ने लगभग हमारे 1 आवर तक का समय लगा, लेकिन हम लोगों ने हमारा पूरा जो ये पेपर था इसको बहुत अच्छे से हम लोगों ने सॉल्व किया। एक एक चीज़ मैंने आपको इस पेपर में बताई, और हमने कई सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए जो मुझे लगे कि उस टॉपिक से आते हैं। अगर आपको अपने सेट का भी चाहिए तो आप आस्क इन डिस्क्रिप्शन, आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में डिमांड कर सकते हैं कि प्लीज़ आप इस सेट को सॉल्व कीजिए और एक लिंक प्रोवाइड कीजिए जिसमें कि आई कैन अपलोड द क्वेश्चन पेपर। आई विल श्योरली अपलोड। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स।